हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, जिनको भी जो वाली ग्रीटिंग चाहिए वो ले लो। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं मैं और हारिस, कैन इस्लाम बी रिफॉर्म्ड? यार मेरे को सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, इसमें हिंदी उर्दू में रिफॉर्म का कोई वर्ड है? हिंदी में तो होगा, उर्दू में भी होगा, बट आई थिंक मेरी उर्दू है वैसे माठी। आई थिंक देयर माइट बी अ वर्ड। लेट्स ट्राई गूगल इंग्लिश टू उर्दू। हाँ, देयर हैज टू बी। हुँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हिंदी में तो एब्सोल्युटली होगा, बिकॉज़ आई नो कि जो आप हिंदी लोग में है की। सुधार, हिंदी में एक ही वर्ड है सुधार। हाँ, वो सुधार तो इसमें भी आएगा, लेकिन वो नहीं, लेकिन सुधार तो बेहतरी होती है। इस्लाह। हाँ, बेहतरी हो गया। ओह या, इस्लाह इस्लाह इज द राइट वर्ड, लेकिन इस्लाह भी करेक्शन में आता है। रिफॉर्म नेसेसरली, रिफॉर्म इज रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही हो। ओ यू जस्ट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ इट, you're improving एक्चुअली। या कुड इट हुँ, बी, इज रिफॉर्म always considered पॉजिटिव? आई मीन इसकी तो नहीं तो क्या अगर मतलब डिफॉर्म होगा। या you're right actually, otherwise it would be deform। या नहीं तो डिफॉर्म होगा ना, तो हाँ, पॉजिटिव चेंज, अच्छा तो फिर सुधार ओके, ना। but then in that case islah is fine, sudhar is fine। Yeah, I think that would be सुधार fine, yeah। और एकदम टेक्निकल वर्ड तो दोष निवृत्ति। बहुत ताड़ी खैर हो जावे। दोष हमें निवृत्ति। हमें हमें सुधार ही ठीक है। आगे ना सारे जमीन पे। सारे 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 होश ना था जी। लगता है अभी कोई मंत्र सुनाने लगा है। मैंने एकदम शुद्ध संस्कृतम वर्ड यूज किया है। मैं संस्कृत में, यार मैंने एकदम पहले भी बताया था। आई थिंक देयर वाज एन इंटरव्यू कैरिड आउट ऑफ अमिताभ बच्चन विद जया बच्चन, प्रोबेबली सम टाइम इन द 80s। मैंने खैर बाद में देखा था वो, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ। उसमें अमिताभ कोई अपने शो करने के लिए उस वक्त लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहां पे कोई एनआरआई कोई उनका इंटरव्यू करते हैं। यार उस बंदे ने ऐसी सुशील संस्कृत या हिंदी बोली, एक लफ्ज उसके अंदर ऐसा नहीं था जो आउटसाइड ऑफ हिंदी डोमेन हो। और दूसरा, कोई आ वगैरह भी नहीं थी, बड़े ठहराव में बात की हुई थी। दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई हर्ड दैट, आई वाज लाइक वाह, अगर आपने बात करनी है तो ऐसे करनी चाहिए। इसलिए जब मैं उर्दू में जब अपनी बात कर रहा होता हूँ, अपनी स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कुछ ज्यादा से ज्यादा उर्दू के अल्फाज बीच में ठोकूं, लेकिन बड़ा हम्म। मुश्किल होता है। अभी क्या होता है कि अगर अच्छी हिंदी अभी यूट्यूब में अगर कोई बोल रहा है ना तो अजीत भारती बोलता है। यार अजीत भारती इतनी अच्छी हिंदी में बात करता है। कमाल है। अरे वैसे ना, ये एक आर्ट भी है। अब देखा ना, ये निकलने लगा था अंग्रेजी का जुमला। तो ये भी एक आर्ट है कि जब आप, कला जब कला। खालिस्तान, अभी मैं प्योर बोलने लगा था, खालिस्तान जब आप उसी जबान के अंदर या उसी भाषा के अंदर बात करें, तो वो जो ना, वो बेहतर चीज है। एनीवे, लेट्स मेरी फोकस हिंदी ऑन। काफी काफी गंदी हो गई है अभी। पहले तो मेरी हिंदी इससे भी अच्छी होती थी मगर मेरी अभी अंग्रेजी ठीक है। गंदी होती जा रही है। कोई अंग्रेजी क्या बोलने वाला है नहीं मेरे साथ। अब मैं जिसके जहां पे भी जाता हूँ, उर्दू उर्दू ही बोलता हूँ, इसलिए मेरी अब अंग्रेजी फंस फंस के निकलने लग गई है। यार बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है इससे। अभी क्या करें? तो चलो अभी सबसे पहला मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ लोगों को क्यों हमने इस चर्चा को करने का निर्णय लिया। तो अगेन एज़ यूजुअल हारिस वीडियोज़ बनाता है। आजकल हारिस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में काफ़ी वीडियोज़ बना रहा है। वाह, तो मैंने देखे थे कुछ, तो हारिस बड़ा हारिस हँस भी रहा था कि मजा आ रहा क्या क्या होने वाला है मोमिनों का। तो था। मगर मैंने फिर हारिस को बोला कि इसके तह पे जाते हैं कि असल में जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो अलग है, उसको बाद में हम देखेंगे। वो जो करने की वो जो जो करने का जो एक तरीका वो इतना नहीं मैटर करता। क्या कर रहे हैं उसको तो हम रिफ़ॉर्म ही कहेंगे। तो फिर सरसरी तौर पे रिफ़ॉर्म अगर हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि रिफ़ॉर्म है कि एक एक जो एक पद्धति है, जिसको एक तौर तरीका बोलते हैं, जो सदियों से चली आ रही है, जिसको आज की मोरालिटी, आज के अगर हम स्टैंडर्ड से अगर उसको तोलें, तो वो गलत मानी जाती है और उसे उसको बदलने को हम अगर रिफ़ॉर्म कह रहे हैं, तो हमने डेफ़िनिशन हमारी दे दी है, पॉज़िटिव चेंज मतलब अच्छा बदलाव, इसे हम रिफ़ॉर्म कह रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इस्लाम के सब्जेक्ट में अगर ये देखें, इस्लाम के इससे, तो क्या हारिस, क्योंकि यू हैव ऑलवेज बीन, आई डोंट नो योर व्यू नाउ, बिकॉज़ पहले तू बड़ा, तेरा व्यू बड़ा नेगेटिव होता था टू रिफॉर्म। आई एम नॉट सेइंग नो यू नो, हैड अ नेगेटिव व्यू ऑफ रिफॉर्मिस्ट, आई एम सेइंग नॉट यू आर इवन नॉट दैट।
Yeah. No. I think you always confuse that with Armin Nawabi. I think it was Armin Nawabi who's always like very hawkish about it and needlessly basically. अब मैंने तो हमेशा इसकी यही एग्जांपल दी है कि एक तरफ से जो अपोस्टेसी है वो उसको खाई जा रही है, दूसरी तरफ से रिफॉर्म खा रही है, तो एंड में आकर वो दे विल यूनाइट समवेयर जहाँ पे जो उसका रिजल्ट निकलेगा दैट वुड बी गुड फॉर द एंटायर वर्ल्ड. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. Whether that can be achieved or not, वो वाली बात जो है that remains to be seen. But again, और ये सारी चीजें tied down है जैसे आपने बोला कि MBS जैसे कर रहा है. Was that the only way? Is this the only way to do it? मैं इससे पहले ये बता दूं कि रिफॉर्म बहुत सारे मुसलमान बहुत तरह के हैं और Hmm. जो जो एक तो जिहादी हैं, एक इस्लामिस्ट हैं, एक नॉमिनल मुस्लिम्स हैं और एक सेकुलर लिबरल मुस्लिम्स हैं. लेकिन कोई भी इनमें से किसी के अंदर भी इस्लाम को चेंज करने की हिम्मत नहीं आती पर से. एंड दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस के कैसे इस्लाम इतने अरसे तक अपनी शेप में कायम रहा. यस, इट हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट समटाइम्स अंडर ड्यूरेस. ये स्लेवरी को खत्म करना या नेशन स्टेट्स का आना, खिलाफत का खत्म होना, ऑल ऑफ दीज वर अंडर ड्यूरेस. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बाहर से आउटसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से वो चेंजेस आए. लेकिन वो आ गए. एंड देन पीपल हु एग्जिस्ट इन मॉडर्न नेशन स्टेट्स वो समझते हैं कि वो ये भी प्रो इस्लामी है. सो दे हैव बीन रिफॉर्म टू अ पॉइंट. लेकिन इस्लाम की जो स्पिरिचुअल सेंस है उसकी थियोलॉजी को रिफॉर्म करना फॉर एग्जांपल दैट हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ चैलेंज. इवन हर चीज में पॉलिटिकली भी ये चैलेंज रहा. लेकिन जैसे बताया कि दुनिया बदल रही थी, नेशन स्टेट आई तो ठीक है उसको रिफॉर्म कर दिया, बट बाकी दुनिया को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. आप दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, 8 नमाजें पढ़ते हैं, नो बड़ी केयर्स अबाउट दैट. सो दैट रिमेन वो वैसे का वैसे ही रहा. ऑल्दो एक ब्रीफ रिसर्जेंस आई इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यू नो, लाइक इन थ्रू द वर्ल्ड वाज चेंजिंग, कम्युनिज्म भी आ रही थी और पर्शिया के अंदर भी आप देखते हैं कि किस तरह बड़ी मॉडर्निटी आ रही थी और ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक ऊपर जा रहे थे. लेकिन बट ऑल ऑफ दैट वाज बाउंड बैक एज वेल बिकॉज़ एंड दैट और इस्लाम ने फिर ये साबित किया कि मैं भी जिंदा हूँ. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. So Islam, unlike most other religions, has been very successful in keeping its original shape. अब जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो कोई एक ऐसा एजेंट हमें चाहिए, कोई ऐसा एक्टर चाहिए जो जो इसको इस्लाम को उसके अंदर इतनी सूझबूझ हो. मेरे हिसाब से तो वो एक्स मुस्लिम ही होगा या एथियस्ट ही होगा. क्योंकि जो बंदा ये पहले से अपनी पोजीशन बना लेना, दिस इज द राइट रिलीजन, यही सही है, चाहे कोई कितना लिपस्टिक मुसलमान क्यों ना हो. आई हैव सीन इवन कम्युनिस्ट पाकिस्तानीज एंड कम्युनिस्ट मुस्लिम्स हु आर फर्म बिलीवर्स इन अल्लाह एंड मोहम्मद. Maybe they're putting on an act, but I doubt it. But यार it मर becomes जाएंगे irrelevant. यार अगर झूठ No, नहीं no, 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 बोलेंगे. no, नहीं, लेकिन उसमें फर्क है ना. चलें, एक तो है ना कि चलें वो ड्रामा कर रहे हैं. If they're doing a drama, then that's fine. That means कि उन्होंने कोई चेंज नहीं लाना. चेंज वही बंदा लाएगा जो आके उसको चैलेंज करेगा, राइट? सो इट्स इररेलेवेंट कि अगर वो कुछ करते हैं या नहीं करते. बट द पॉइंट इज कि जब तो एमबीएस का मैं ये आपको क्लिप दिखाना चाहता था कि एमबीएस की ये अगेन आई हैव प्लेड दिस. और ये मैंने बड़े पुरानी वीडियो 5 साल पुरानी है हम्म. और किसी ने नोट नहीं किया. तो ये जब मेरे नजर से गुजरी, मैं पता नहीं क्या कह रहा था, तो फिर मैंने इसको चलाया तो बहुत सारे लोग ये वो है, काफी लोगों ने इसको, लाखों लोगों ने देखा इस वीडियो को. तो खैर मेरी चैनल के थ्रू और लोगों डेविड वुड वगैरह के चैनलों के थ्रू और आपने भी मेरा ख्याल देखा होगा. तो जरा इसको सुनने कि ये बंदा क्या कह रहा है. Whether that's true or not, it's irrelevant. Again, जो पब्लिक को जो जाता है, जो पब्लिक में परसेप्शन जाता है, that's what matters. So have a أحد ضباط السي اي اللي أصبح الآن عضو في الكونغرس تكلم، قال: قابلت محمد بن سلمان قبل سنة ونص تقريبا شخصيا بيني وبينه، وحكى لي كلام خطير. هو يقول ये هو पॉडकास्ट भी بنفسه है ना يقول. आपकी, ये ऑडियो पॉडकास्ट भी जाती है ना, तो let me read that as well. तो ये एक बंदा है सऊदी जो ये कह रहा है कि मुझे एक बंदे ने बताया है जो सीआईए का पहले ऑपरेटिव था और फिर अब वो यूएस का कांग्रेसमैन है. और उसने मुझे बताया कि प्रॉब्लम कि एमबीएस ने उसे कहा कि प्रॉब्लम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और जिहादियों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो इस्लाम के अंदर है. So let me finish that. قال لي: المشكلة ليست في المتطرفين، والمشكلة ليست في الجماعات الجهادية، المشكلة في الإسلام نفسه.
وعلينا أن عليكم أن تتعاونوا معنا أيها الحكومات الغربية حتى نساعد في تغيير الإسلام نفسه. तो एमबीएस ने उस गोरे को कहा कि आप हमारी वेस्ट को हमारी हेल्प करनी चाहिए इसको इरेडिकेट इस्लाम को रिफॉर्म करने के लिए। ही डिडंट से इरेडिकेट, उसने कहा रिफॉर्म करने के लिए इसको हमारी वेस्ट की हेल्प करनी चाहिए। और एमबीएस ने ये स्टेटमेंट उस बंदे को فهو की। الرجل الآن يصرح لهذا الشخص ما لم يصرحه لغيره أنه يجد في المشكلة في और वो इस्लाम को प्रॉब्लमेटिक समझता है। आगे चल के वो बेसिकली यही बताता है कि ये पहले भी बड़े लोगों ने ऐसी करने की कोशिश की, कभी कामयाब नहीं हुआ। लगता है इमोशनल टॉक। दिस डज साउंड लाइक कि, और ये यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये आज से 5 साल पहले आई थी। तब ये जो हम अभी जो स्टेप्स देख रहे हैं, ये तब उस वक़्त स्टेप्स नहीं आए थे। जो लाउड स्पीकर पे पाबंदी, अब हज आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में उसने कहा कि ओए पास आ जाओ, और रिफॉर्म औरतों के सारी चीज़, दिस वाज़ बिफोर दैट। और अभी वो अप एंड कमिंग था, अभी ही वाज़ अ मिस्ट्री, नोबडी न्यू दैट। सो इफ ही कम्स इन, इट साउंड्स लाइक समवन वुड जो इसको वाक़ई बिलीव करता है, वही इस तरह की बात करेगा। एंड देन the rest is history कि किस तरह उसने दिखाया कि हाँ भी उसने yes and again then that's the third point I know कि वो whether how he does it with an iron fist or whatnot। तो जो रिफॉर्म की जो बात है, yeah, I don't know, like I mean it has never been done to this point internally। Internally कभी successful नहीं हुए। Yeah, with the Israelites etc we had some different factions of Islam within Islam। लेकिन रिफॉर्म जैसे जिस तरह क्रिश्चियनिटी रिफॉर्म हुई, या एक हिंदुइज्म के अंदर जैसे एक कांस्टेंट एवोल्यूशन का प्रोसेस था, वो इस्लाम में कभी नहीं हुआ। अंदर से नहीं आया। एज ए सेड पॉलिटिकली बाहर से आया है, जो इन्फोर्स किया गया, नेशन स्टेट्स आई एंड एंड ऑफ द खिलाफत व्हाट नॉट। तो इसमें इशू एक है कि सबसे प्रश्न पड़ा उठता है कि क्या रिफॉर्म का एम करना ही इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमति नहीं रखता, और मैं अपने आप को मैं अपने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इधर एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अगर इतिहास में देखा जाए तो जब भी किसी ने क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की, ऐसा तो था नहीं कि जो ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने आके बोला हाँ जी तुसी ऐ लो, तुसी बह जाओ इत्थे, आ जाओ, मतलब ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। क्रिश्चियनिटी का रिफॉर्म भी बड़ा ही ब्रूटल, मतलब इतना दर्दनाक था, इतनी जानें गई, इतने लोगों ने एक दूसरे को मारा। वो छोड़ दो, फ्रेंच एनलाइटनमेंट का इतिहास अगर कोई पढ़ लेगा, जिसको उर्दू में तारीख कहते हैं, फ्रेंच एनलाइटनमेंट एक ब्लडी प्रोसेस था। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि 4 लोग बैठ गए आज से बस यही होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत खून बहा उसमें। भारत में भी जब रिफॉर्म हुआ, भारत का केस अलग है, लोगों को ये समझ में नहीं आता। इनफैक्ट मैंने ये मोनोलॉग में समझाया था कि क्यों हिंदुत्व हिंदू मॉडर्निटी है, और इसको मैंने पूरा इंडिया की अर्ली मॉडर्निटी से लेकर आज तक सब किया था कि इंडिया में अर्ली मॉडर्निटी अगर हम किसी को बोलेंगे तो जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसमें 1400s में आती है, इंडिया में 11th सेंचुरी में आई थी भक्ति मूवमेंट से। कैसे भक्ति मूवमेंट ने कास्ट हायरार्कीज और कास्ट ऑर्थोडॉक्सीज को चैलेंज करना शुरू किया था, और करते 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 फिर भक्ति मूवमेंट आज पॉलिटिकल हिंदुइज्म बनती है, जो आज हिंदुत्व होता है। और वही मूवमेंट में तुम आर्य समाज को ले लो, और भी सारी मूवमेंट्स को ले लो, स्वामी विवेकानंद को ले लो, ब्रह्मो समाज को एक एक्सटेंशन एक तरीके का ले लो, फिर दलित उत्थान होना थ्रू द दलित कम्युनिटी, अंबेडकर को ले लो, और भी सारे वो लोग भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म नहीं हो सकता। और जब ये लोग भी रिफॉर्म कर रहे थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक मैंने पढ़ी है, कास्ट प्राइड, मनोज मित्ता की लिखी हुई। उसमें है ना, उन्होंने सिर्फ लास्ट 200-300 साल के है ना केसेस किए हैं कि कैसे हर टाइम रिफॉर्मिस्ट ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कोर्ट में जाती है, बोलती है ये गलत है स्क्रिप्चर के हिसाब से, ये गलत है स्क्रिप्चर के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस अलग कम्युनिटी में नहीं आई है। मगर मैं जब भी इस्लाम में रिफॉर्म की बात करता हूं ना, मुझे आंसर आता है 2 सेट से। एक है हिंदू से, और एक है एक्स मुस्लिम से। मैं नहीं बोल रहा हूं तुम मुझे ये आंसर देते हो, सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट।
मगर एक एक्स मुस्लिम्स में बहुत एक डिसमिसल सा आता है। और हारिस, ये सिर्फ आरबिन नहीं है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। इनफैक्ट आई थिंक अपोस्टेट प्रॉफिट भी ये आर्ग्यूमेंट देने लगा था। उसने कहा था कि क्रिश्चियनिटी यूनिकली रिफॉर्म हो गई, भाई इस्लाम नहीं हो सकता। ये यार, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये किस बेस पे देते हैं ये लोग? मेरे को तो ये बेस ही नहीं समझ में आता। yeah, look, the argument है, उसमें ground तो है, and again we have 1400 year of history as well, कि कई लोग बड़ा simply उसको over simplify करते हैं. I don't know about the 11th century one जो आपने बताया, वो obviously that's very interesting to know, कि लेकिन इंडिया चूंकि insular था, that's why they had this continuous Hinduism में, they had the continuous culture of inquiry and evolution, और काफी आइसोलेटेड भी था, अनलेस ऑब्वियसली अंटिल मुस्लिम स्टार्टेड कमिंग इन, तो वो तो एक डिफरेंट है। लेकिन हिंदू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपस में दे केप्ट एट लॉगर हेड्स। वहां पे ओवर सिंप्लीफाई ये कर देते हैं कि बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ वर्ड, बाइबल इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, तो इसलिए उसके अंदर छेड़खानी हो सकती थी, इंटरप्रिटेशंस आ सकती थी, and therefore they kept going, and ended up changing printing press वगैरह etc. आई political upheaval हुई। इस्लाम में वो कहते हैं कि जी चूंकि कुरान इज सच अ स्ट्रॉन्ग बुक, और उसका जो क्लेम है कि दिस इज अ लिटिल वर्ड ऑफ गॉड, देयरफॉर इट कैन नॉट चेंज, सो अदर पीपल हैव द लग्जरी कि वो उसको अपने मतलब चेंज कर दें। आई थिंक दिस इज आल्सो एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, एंड मे बी 300 यू मे बी यू आर ऑन टू समथिंग, क्योंकि जब हम देखते हैं कुरान के तर्जुमों को, या दे कांट चेंज द लिटल वर्ड ऑफ, जो कुरान का जो लिटरल वर्ड है उसको चेंज नहीं कर सकते, बट दे हैव चेंज देयर मीनिंग्स बियॉन्ड रिकग्निशन, टू अ पॉइंट के जितने सेक्ट्स हैं, टू अ पॉइंट के वो तो ऐसे है कि आपने कुरान को ही बदल दिया। इतनी इंटरप्रिटेशन है। सो फॉर एग्जांपल बीवी को मारने का भी मतलब निकाल दिया, तो अगर आपने बीवी को मारने की बात निकाल दी, उसको इंटरप्रेट ऐसे कर दिया, सो इन दैट केस यू कैन एक्चुअली एट द बैक ऑफ इट यू कैन ब्रिंग अबाउट a feminist revolution, and that's the sad part, and I think, yeah, you're right on that point, और ये फिर हम 100-200 साल बाद you can tell कि हाँ भाई you were wrong, लेकिन we could be going through it right now, कि जो for example जो feminists हैं, they are Muslim countries में, throughout Muslim country, let's just talk about अपने पाकिस्तान में भी, they are bringing about a silent feminist revolution despite of all the misogyny that exists in Orthodox Islam. Uske बावजूद, and they are very cleverly reinterpreting the verses, and if they have to bring it, वैसे they try to stay away from it, but the point is कि जो बीच, क्योंकि जब आपकी प्री कंसीव्ड आइडिया होता है कि कुरान एक बड़ी अच्छी किताब है, इसके अंदर कोई गंदी चीज हो नहीं सकती, एंड देन यू से कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो देन दे बिलीव, द नेक्स्ट रिएक्शन इज नॉट दैट ऑफ कि मैं इसको इंक्वायर करूं, वो क्या करते हैं, इसको चलें जी हम इसको रीइंटरप्रेट कर देते हैं, हम इसको ना फेमिनिस्ट फ्रेंडली बना देते हैं। सो that is essentially reforming it, and the biggest argument everyone presents कि भाई ये literal word of God है, that's why you can't change it. Yeah, they're not changing the words literally, but they're changing the meanings. So um, जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त जो चेंज आ रहा है वो इट इज पॉसिबल, पर लेकिन व्हाई आई पर्सनली बिलीव के जो इनिशियल क्वेश्चन था आपका कि क्या ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है, आई डोंट थिंक दैट वुड बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। आई एम राइट इन द मिडल ऑफ दिस, मैंने 2 मौलवियों को लड़वा दिया पाकिस्तान में, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, डॉक्टर वाहिदी साहब को, और उनका भी बहुत बड़ा फटा चल रहा है, इसमें बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का। उसकी उसकी पीछे वजह मैं हूँ। वो एक सूरह तलाक की एक आयत है, उसमें एक्सपोज हमने किया है, जो मेरी डिबेट हुई थी, कि छोटी बच्चियों के साथ शादी नहीं सिर्फ, क्या यानी, और छोटी बच्ची कौन सी, वो नहीं 9 साल वाले नहीं जिनको पीरियड आ जाए, जिनको अभी पीरियड नहीं भी आए, उनके साथ शादी भी हो सकती है और उनके साथ मुबाशरत भी हो सकती है। Now that is something that they have kept hidden for such a long time, and we've been talking about this. और इनके आपस में फूट पड़ गई कि नहीं ये इसका मतलब ये है, तो and we have hundreds of references from classical scholars that go both ways. So the point is कि दोनों ने अपनी अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहे हैं, why are they doing this? So a reformist would interpret it as कि नहीं नहीं इसमें छोटी बच्चियों का जिक्र नहीं है, and an orthodox person would be like इसके अंदर है, but then the political push जो आएगी वो
डिटरमिन करेगी कि should we change its meaning beyond recognition or not. And that would be the biggest test, and that's where the muscle comes in, and maybe MBS might be that muscle. इसमें 3 पॉइंट्स हैं। मैं जब भी ये सुनता हूँ ना कि कुरान का डिज़ाइन फंडामेंटली ऐसा है कि वो चेंज नहीं ला सकता है। अभी मैं थोड़ा टाइम लूँगा तुझे, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने को थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहला वर्स है वो तेरा 2.256, देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलिजन, ठीक है? Mm. ये तो कुरान का वर्स है, और कोई बुक का वर्स नहीं है ना, ये कुरान का वर्स है, ठीक है? और दूसरा वो क्या है, वो सूरह अल काफिरून है, जो क्या है 109 या पता नहीं, यू हैव योर वे, आई हैव माय वे, योर Oh रिलीजन टू yeah. यू, माय रिलीजन टू मी, ठीक है? ये Mm. दोनों वर्स अभी मुझे मालूम है इसके आंसर्स भी क्या हैं। ये मक्का में थे, मक्का पहले था, मदीनन वर्सेस बाद में आए। मेरा प्रश्न वो नहीं है। सी, both you and I will agree that God did not make religion, human beings made religion. Mm. Let's get real. Mm. इंसान ने और मैं भी, औरत ने नहीं, आदमी ने रिलीजन बनाया। इतनी सारी मिसोजिनी Mm. कूट कूट के सब रिलीजन में भरी हुई है ना, तो ये औरतां का काम नहीं हो सकता, मर्दा का काम है। तो ये मर्दों ने बनाया है, ये जो ये शगुफा जो है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें मालूम है ये इंसान ने लिखा है, ठीक है? अभी ये जब भी मैं कोई सीरियस रिलीजियस स्कॉलर से बात करता हूं ना, वो बोलता है मगर इस्लाम में एब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट है। तो मैं उनको काउंटर कैसे करता हूं? मैं बोलता हूं एब्रोगेशन है अल्लाह ने दी कि आपने दी? अल्लाह ने तो किधर कुरान में नहीं लिखा था ना कि एब्रोगेशन मैं ला रहा हूं, मेरे लैटर वर्सेस को तुम ज्यादा कर। ये तो स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन थी कि बाद में जो मदीनन वर्सेस आए जी, वो हमने मार लिए। तो अगर समझ लो कोई मुसलमान आया हारिस, उसने बोला मैं मदीनन वर्सेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं, मेरी मेंटल जिम्नास्टिक्स है कि मैकन वर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम थे, तो वो क्यों वैलिड नहीं है और ये एब्रोगेशन वाला आंसर क्यों वैलिड है? No, it's not that simple actually. The Quran actually does say कि हम अच्छी, इससे पहली जो हम आयत लाए हैं तो हम उससे बेहतर भी ला सकते हैं. So that's one of the Quranic abrogation verses. प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि एब्रोगेशन की जहाँ पे आई थिंक देयर 2 or 3 वर्सेस दैट आर एक्चुअली जिसके ऊपर कंसेंसस है कि ये पहले से एब्रोगेट हो चुकी हुई हैं. बट अगेन यू आर राइट, ओवरऑल यू आर राइट कि इवन उसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो जाता है मुख्तलिफ स्कॉलर्स का. इवन ये जो वर्स मैंने आपको कुरान की बताई जिसमें वो ये कहते हैं कि हम इससे पहली आयात से बेहतर आयात ले आते हैं, तो सम पीपल एक्चुअली इंटरप्रेट इट एज नॉट एब्रोगेशन ऑफ कुरानिक वर्सेस. पिछली आयतों से मुराद है बाइबल एंड तोरा. दैट्स व्हाट दे मीन बाय दैट कि बट इन अदर वर्ड्स सम स्कॉलर्स से कि नो दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कुरानिक वर्सेस. जैसे एक आयत है कुरान की जिसमें जब वो जंग होने लगी तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक मुसलमान 100 के ऊपर भारी है, नहीं एक मुसलमान 10 काफिरों के ऊपर भारी है. तो वो भाग गए, वो मुसलमान भाग गए. उन्होंने कहा हम एक बंदा 10 से कैसे लड़ेगा. तो फिर वो एब्रोगेट हो गया अगली उसमें कहा कि एक मुसलमान 2 काफिरों के ऊपर भारी होगा. सो देन दे थॉट ओह अच्छा अच्छा चलें फिर ठीक है. सो यू आर राइट लाइक आई मीन, लेकिन इसकी एक इस्लाम की जो स्कॉलरशिप है इट्स क्वाइट वास्ट भी है और क्वाइट फैली हुई और पेचीदा और कॉम्प्लेक्स भी है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इजमा का जिसके अंदर एक स्कॉलरली कंसेंसस होता है. लेकिन वो कहते ये हैं कि उसके अंदर कंसेंसस होता है. I'm not a trained scholar, of course. So I just tend to look into things in isolation. कि उनका क्या मसला है. For example, you learn something every day. For example, this chapter 65 verse 4 that I was talking about. उसके अंदर और गंद मुझे अब पता चल रहा है कि उसके अंदर और कितना गंद है. क्योंकि जो so called on surface जिसके ऊपर इजमा होता है, even that is not really इजमा, meaning there is no consensus. उसके अंदर भी इनकी जब हम सेकंड और थर्ड लेयर में जाते हैं तो उधर भी अच्छे खासे डिफरेंसेस होते हैं. एंड दैट्स व्हाट्स ऑलवेज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू हैव something as flimsy made by one single man who used to make things up as he went along. जब आप आज एक रूलिंग दे देते हैं उसको आयत में बना देते हैं, फिर आपको पता चलता है हफ्ते बाद कि यार इसमें तो ये प्रॉब्लम रह गई है, एंड देन यू मेक अप समथिंग एल्स. सो it's a mess. Um, but for something that is so shaky and so flimsy underneath or clumsy, उसके ऊपर उन्होंने काम बड़ा किया.
बहुत काम किया उसके अंदर। अब अब मैं क्या-क्या उसकी बताऊँ कि वो कि जो मिस्टेक्स अंदर हैं, उनको कवर अप करने के लिए जो इन्होंने लॉजिकें बनाई हैं, जो उसके अंदर इन्होंने जवाब बनाए हैं, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो द पॉइंट इज़ जो रिफॉर्म के हवाले से, वो ये है कि आई थिंक एनीथिंग कैन बी डन। जो स जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, उनको अगर आप टच ना करें, और जो असल तो प्रॉब्लम आपकी जो जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर, इस्लाम के अंदर, वो प्रॉब्लमैटिक है ना। आपको आई डोंट थिंक कि किसी को भी, किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन, किसी यहूदी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने 5 नमाज़ें पढ़नी है, आपने 30 रोज़े रखने हैं या हज करना। नोबडी नोबडी केयर्स अबाउट दैट। नोबडी केयर्स अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। जो इसका पॉलिटिकल एलिमेंट है, कि खिलाफत होनी चाहिए, हमने इस्लाम का झंडा लहराना है, ग़ज़वा हिंद करना है, जेरूसलम वापस लेना है, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना है। That's the part that actually worries a lot of people. So that can be reformed, and again, that needs some muscle behind that. And I don't know if MBS को अगर कोई फुड़का नहीं देता, then he might be able to do it because he's young. The time is on his side. अब दूसरी आर्ग्यूमेंट लेनी है। ये someone who is a very dear friend, a very close friend of mine, someone whom you know. He's a well respected public intellectual of India, a scientist. His name is Anand Ranganathan. मेरा Mm. बहुत अच्छा दोस्त है आनंद। और इसके पहले कि लोग आनंद को टैग करें, मैं आनंद को व्हाट्सएप कर चुका हूं, आनंद मैं तेरे बारे में बात करने वाला हूं और तेरी आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करने वाला हूं, तो अभी तुम क्या बोलोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आनंद को। आनंद ऑलरेडी नोस, आई हैव ऑलरेडी सेंट हिम अ मैसेज। सो आनंद का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था कि जब भी कोई मुसलमान कुरानिक टीचिंग से या हदीसों की टीचिंग से परे हट के अगर कोई चीज करता है तो ही इज अ बैड मुस्लिम, वो बुरा मुसलमान है कुरान के हिसाब से। समाज के हिसाब से वो अच्छा है, क्योंकि समाज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अच्छा अलग है, मगर कुरान की अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुरा और अच्छा अलग है। तो इसमें समस्या ये होती है कि मैं समराइज कर रहा हूँ, आप आनंद की आर्ग्यूमेंट्स को जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, आप लोग जिनको पढ़ना है। आनंद ने इसके बारे में बड़े विस्तार में बहुत बार लिखा हुआ है। मगर बेसिकली आनंद एक ये डाइकोटोमी क्रिएट करता है कि आनंद बोलता है जिसको हम गुड मुस्लिम बोलते हैं उसको इस्लाम बैड मुस्लिम बोलता है एक्चुअली में, और जिस उसको हिपोक्रेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुनाफिक, मुनाफिक। मुनाफकत जिसको बोलते हो ना Mm. तुम लोग, ठीक है। और जिसको कुरान गुड मुस्लिम बोलता है, उसकी कई हैबिट्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में अगर हम मापदंड करना शुरू करेंगे तो उसको हम बुरा मुसलमान कहेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्गुमेंट? आई हैव I actually डिसएग्रीमेंट्स विद दिस आर्गुमेंट। I actually said I wrote this in my book as well. ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा था कि जो जितना अच्छा मुसलमान होगा वो उतना बुरा इंसान होगा, और जितना अच्छा इंसान होगा वो उतना बुरा मुसलमान होगा। I think it's with hindsight though. Again, as I said, like we have to separate the two aspects of it, एक spiritual aspect और एक political aspect है। And again, अगर कोई spiritual है, by the way, I don't agree with that term, but I'm just सर कोई इसी से ही एग्री करेगा कि अगर आपने नमाज पढ़ी है, ऊपर देख के बातें की हैं, रोजे रखे हैं, हज किया है, इवन ज़कात चैरिटी की है, these are harmless things, these are just spiritual practices, right? I don't think even किसी हिंदू को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Oh, of course they might have a problem अगर लाउड स्पीकर के ऊपर जान दे देंगे, then they'll be like, yeah, what the hell man. So जो इसके स्पिरिचुअल एलिमेंट है, और वो ये काम बड़ी अपनी शिद्दत से कर रहा है, 5 वक्त की नमाज़ है, छठी भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, हर चीज़ कर रहा है, then he can, at the same time, he can be a very good person. If anything, he'll be more disciplined as well. So I don't think we should judge him on that particular part only. लेकिन असल में प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, and these things go hand in hand, कि the more you get sucked into this नमाज और ये फिर मौलवी और इस तरह की चीज़ों में, तबलीगी जमातों में, then the more you start seeing having these dreams of grandiose, khilafat and world domination and all that, and that starts leading you to a problem. But in this fast-paced world, इस आजकल की दुनिया में, अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल विल हो,
So it might be again because it hasn't been done. These are uncharted territories. ये पहले हुआ नहीं, इसलिए हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि we might be able to reduce Islam just to the confines of people's houses again. जो मैंने कहा जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, और जो स्पिरिचुअल एलिमेंट के बाद जो उनकी जो जंप लगती है पॉलिटिकल ड्रीम उसकी इम्प्लीकेशंस की, जब वो आ जाती है, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो फिर इट वुड बी फाइन, बट यू वुड सी कि ये इतना इट्स इजियर सेड देन डन कि आप देखें जो मदरसों में यही हुआ, मदरसा शुरू इसी तरह ही होता है कि बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाएंगे, बच्चा नमाज पढ़ना सीखेगा, देन दोज प्लेसेस एंड अप बिकमिंग एक तो बच्चों के साथ जातियां करते हैं, वो एक विशियस साइकिल, वो अलग, दैट्स नॉट इवन इस्लाम रिलेटेड, एक वो चीज चल रही है और बड़ी पुरानी है, पुराने इमाम के वक्तों से चलती चली आ रही है, इट्स नॉट नेसेसरली जो आपके क्लासिकल स्कॉलर्स हैं इवन दे हैव रिटन अबाउट कि बच्चों की के साथ ये वहां पे मौलवी शोलवी क्या करते रहते थे, सो फॉर सम रीजन इट हैज जस्ट lingered on for nearly 13-1200 years or something. तो इसको अगर आप मदरसा शुरू इससे होता है और फिर क्या काम शुरू हो जाता है, फिर वहां से वो जहाद और फिर ये दहशतगर्दियां और आतंकवाद की तरफ निकल जाते हैं। तो अगेन अगर ये separate हो जाता है, which I think it can be done if there is political will, I think it could be done, it might take some time, then Anand ka or even my own court would fall apart. क्योंकि as I said, I've said more or less a similar thing in my, I've written that thing in my book as well. हम ऐसा नहीं कर सकते because the five pillars of Islam, I'm sure you would have heard of them, they're actually all spiritual. You know, Tawheed, belief in one God, Salat, Namaz, Roza, Hajj, Zakat. Jihad is actually the sixth pillar, which is not really a pillar. So if और इसके अंदर खिलाफत भी नहीं है, इसके अंदर serving the nation भी नहीं है, it's purely spiritual. So you just need someone clever to be able to reform all of that and with a bit of muscle power. So again, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ with hope because or not with certainty because it has never been done before. You are, but there's first time for everything. आप यही सोचते हैं कि अगर ये हो सकता था तो अब तक हुआ क्यों नहीं? But other religions have achieved that reformation through separate pathways. Maybe this might be Islam's के, which brings it back to the subject of this stream के MBS might be able to do it because they have जो हमारे पाकिस्तान में जो गंद आया था वो सऊदी अरब से ही आया था, ये मदरसा पेट्रो डॉलर्स वगैरह वहीं से आए थे, और उसके बाद जो in other words I think Indian Muslim Pakistani Muslims living side by side Hindus for so long, a lot of people say that they were more so spiritual. Yes, there were fault lines, Hindu, Muslim और काफर वो fault lines थी, वो एक pride भी था, oh जी, you know, हम मुसलमान chosen people, all that kind of jazz, but there was the dogma, the Wahhabism that was imported later on. So if that cuts down और उसके बाद एमबीएस अगर रिफॉर्म कर देता या वो कह देता कि नहीं भी अब हमने उल्टा सेकुलरिज्म का रिफॉर्म करना है, who knows, it might be possible if we can just reduce it to spirituality. I don't know if that answers the question. Yeah, I'm not convinced with either you or Anand. The problem is that ड्यूटरोनॉमी और लेविटिकस क्या कहती है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर? क्या वो टेक्स्ट चेंज हुई है? एक No, एक शब्द चेंज हुआ है उसका? वो लोग बैड क्रिश्चियंस हैं जो आज मारते नहीं है होमोस को? No, but लेकिन उसके जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के पास तो आ गया ना, न्यू टेस्टामेंट आ गया ना, they just say that the new testament kind of overrides, that's their abrogation of the old testament. यार, the New New Testament lacks Testament all is of that. silent on those issues. I It doesn't mean think they the better, discard the Old Testament. I think the better, yeah, no, yeah, I know it's problematic for them, but they can say that we can turn that down because they can find some other quotes of Jesus जिसको वो justify कर सकते हैं. I mean, for example, adultery की stoning को, you know, thou shall not cast, जिसने पहला पत्थर नहीं कोई जुर्म नहीं किया, that he should cast the first stone. Again, he should have said no one should cast any stones, right? But it's all mental gymnastics with that. Like, but anyway, but I think what I'm saying is Islam does not have to take the same route as them. I'm saying it actually can take it if we can just reduce it to spirituality
and we can have this new wave of scholars, probably funded by some reformist elites like MBS himself, और वो इस तरह की तरबियत देने लग जाए, within 1 or 2 generations people can see a significant change. देखो मेरा फंडा सिंपल है, रिफॉर्म बाय इटसेल्फ इज मेंटल जिम्नास्टिक्स एंड नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं रिफॉर्म में। बेसिकली यार एक आदमी देखो ये, और ये है ना, रिफॉर्म इन मोनोथीइज्म इज अ यूनिकली टफ प्रोपोजिशन, बिकॉज मोनोथीइज्म की प्रॉब्लम है वो वर्ड ऑफ गॉड, ओ आया सी, ओ एंजल नु क्या, एंजल ने प्रॉफिट नु क्या, प्रॉफिट ने किताब च लिखता, और फिर That's वो all in बात, Islam. हाँ That's all in Islam. I mean, the previous prophets used to talk directly to God, or Jesus was हाँ God मगर himself. हाँ मगर पॉइंट ये है कि ये सारी प्रॉब्लम मोनोथीइज्म की है। देखो हिंदुइज्म में तो हमारे इशू ही नहीं है, वो स्मृतियों में जो लिखा हो ना, आज तुम किसी हिंदू के पास जाओगे तो बड़ा कन्वीनियंटली कह देगा मैं तो उसको रिजेक्ट ही कर देता हूँ और कुछ नहीं होना, वो रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए। मगर ये इसीलिए मैं कहता हूं ये जो आर्ग्यूमेंट जो यूनिकली क्रिएटेड फॉर इस्लाम है ना, या तो आप इंटेलेक्चुअली कंसिस्टेंट बनो कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म तीनों तीनों में प्रॉब्लम है, तो मेरे को एक बात बताओ, ओल्ड टेस्टामेंट तो चलो क्रिश्चियंस की तो न्यू टेस्टामेंट हो गई, ज्यूस की क्या हुई? उनकी तो किताब ही ओल्ड टेस्टामेंट है। वो मैमोनिडीज ने तो वो पूरी बुक को ही उल्टा पलट कर दिया। Yeah, well, यहूदियों का, well, that's why again Yehudi also had to be very secularized, ना? तो जो उनके जो ऑर्थोडॉक्स हैं, they actually demand some biblical punishments. वो जो टोपी और वो जो पॉइंटी हेयर्स वगैरह जो पहन के फिरते हैं, they actually want. Have you seen some of those Jews who actually are against the state of Israel? उन यहूदियों को देखा है, they don't do that out of human rights or for out of good heart for towards Palestinians. इस वजह से नहीं करते वो इस वजह से करते हैं because in that sect of Judaism they have a belief कि they need to be conquered by some people और फिर उनका मसाया आएगा. So they want to fulfill the prophecy. That's the reason why. और ये इतने बेवकूफ हैं, ये उनको यूज करते, कहते देखो यहूदी भी हमारे साथ खड़े हैं. और उनकी वो प्रोफेसी फुलफिल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई ये बुरे लोग आके हुकूमत करेंगे, हम मजलूम बनेंगे, then a Messiah will come. That's the reason they do it. Yeah, look, I mean, Judaism, I don't really understand much, but as I said, like उनके जो मौलवी हैं, they also want to uh, follow uh, Bible to the T. लेकिन anyway, but लेकिन हमारे तो इस पे जो बात है, look, I'm agreeing with you. I don't know why you're having a problem with that. I'm actually saying yes, I think it's possible. The only reason why I am skeptical, but not as hawkish as other guys, is because it hasn't been done before. ये हुआ नहीं है पहले. ओ यार So कम से कम उन्होंने बैड मुस्लिम तो ना बुलाओ। I mean, नहीं, but ये चीजें तो, I mean, ये तो जो slurs वगैरह, I mean, these things will keep coming, or they're coming and going. I think मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम एक वैसे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, whether Islam is reforming or not, or some Muslims will say, Orthodox will say it's being contaminated. Um, वो हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी स्पीड से रिफॉर्म हो रही है. I think that's happening. That's happening right before our eyes. Um, I deal with this person who keeps keeps inciting hatred towards me because उसको गुस्सा ये चढ़ता है कि यार ये इतने बड़े-बड़े मौलवी हारिस का नाम, हारिस से बात क्यों कर लेते हैं? या हारिस के साथ आम तरीके से बात क्यों कर लेते हैं? उनको वो डॉग व्हिstलिंग भी करता. तो लेकिन nothing happens anymore. I think yeah, I sometimes I get worried for the safety कि यार ये डॉग व्हिसल कर रहा है लोगों को मेरी वजह से. लेकिन I think people within these 5 years, people have come to the realization कि हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है. इस तरह के मनहूस लोग भी हैं, यू नो इस तरह के कुशाल जैसे मनहूस लोग भी हैं जो हमारे मजहब के ऊपर ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, बट हमें इनके साथ रहना पड़ेगा. सो आई थिंक ये चेंजेस भी अभी आ रही हैं, एंड दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू हैव दिस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन पीपल कि आप या हमें इस्लाम को बदलना होगा,
या हम अपने मुसलमानों को खोते जाएंगे? यार देख, मेरा क्वेश्चन क्या होता है मालूम है, और अभी हम मुद्दे पे आते हैं एमबीएस के। मेरे को इतनी हंसी आ रही है, किसी बंदे ने तुझे और मुझे दोनों को ये सुपर चैट दे, तुसी दोनों रल के एवी एमबीएस नु नजर ना लाओ। एमबीएस इज द करण अर्जुन और सऊदी, और दोनों क्या तुसी दोनों रल के एमबीएस नु नजर ना। अरे अरे ਅਸੀਂ नहीं नजर लगांदे भाई सानू तो एमबीएस चंगा लगदा है। वी लाइक नहीं, वो एमबीएस। मुझे कई लोग, हाँ मैं तो, और नहीं, लेकिन एमबीएस का वो, मुझे कई लोगों ने कहा वो हारिस बाज के एमबीएस के, एमबीएस योर मैजेस्टी। मैं तो खुद कहता, मैं तो अंग्रेजी में आई कीप सकिंग अप टू हिम, आई से एमबीएस इज आवर गाय। लेकिन मैं ट्रोल कर रहा हूँ, मेरी पता नहीं वीडियोस बड़ी ऊपर लाख लाख पे जा रही है एमबीएस के ऊपर, जो वीडियो बनाता हूँ वो ये कि आई जेन्युइनली, लेकिन वो कहीं वो ट्रोलिंग की ज्यादा ही ना आ जाए, वो कहे कि ये कौन हरामी है जो जिसने ये मेरे खिलाफ ये र्यूमर फैला दी कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, एथियस्ट हूँ। फिर वो सारी उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, उन्होंने कहा चलो जी अनु एम्बेसी तो बुलाओ ना जरा। करो जी वो जरा वो पीसीस लाओ। तो मैं कहा नहीं भाई, हिज मैजेस्टी, भाई हम तो हिज मैजेस्टी के फैन है। लेकिन नो, आई थिंक जो पॉइंट है आपका कि वो हाउ इज ही गोइंग टू डू इट, he's a very he's ruling Saudi Arabia with an iron fist. I mean, he's a young man. He's only 38, I think, or which means potentially he could be around for 30, 40, 50 years. Who knows? ये लोग तो जीते भी बड़ा लंबा लंबा. They go up to 90, 90 something. So, so if he stays around for that long, doesn't become complacent, which I doubt he will be, at least for the foreseeable future. Um, if he hangs around for 10 15 years, a lot can change, and I don't think he's ये एक ऐसा लोग ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं, जो एक सेक्युलरिज्म है, या I mean, Saddam Hussein was a secular leader, yeah. Saddam Hussein did not care about Islam. He did not care. और उसने सारे सुन्नियों को भी डंडा दे के रखा हुआ था, even though Iraq is majority Shia, but he was Sunni, but he didn't really, he was very secular. लेकिन उसने इन सारों को ढक के रखा हुआ था, एंड दे वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम, ऑल ऑफ हिम। वो फिर जब अमेरिका आया, अपहीवल हुई, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो देन यू रिमेंबर कि क्या सुन्नी शिया का फायदा हो गया। सो इवन सऊदी अरब के अंदर भी वहाबीइज्म, जो इतना स्ट्रिक्ट ब्रांड ऑफ इस्लाम है, व्हिच इज सो मिलिटेंट एंड सो डॉगमेटिक और सो ब्रूटल, वो अपनी जगह पे कायम है। बट देयर इज वन मैन, बिकॉज देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज पूरा एक स्टेट का apparatus है, उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर, वो उसके होल्ड उसके ऊपर रहेगा। द प्रॉब्लम इज कि अगर वो कुछ हो जाता, कुछ अपहीवल, कुछ अरब स्प्रिंग टाइप 2.0 हो जाता, देन देन अ लॉट ऑफ, जिस तरह भेड़ों का छत्ता गिर जाता ना, फिर भेड़ें हर जगह पे आती हैं, देन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। बट आई थिंक ही सीम्स लाइक अ स्ट्रांग मैन। आई थिंक ही विल हैंग अराउंड, और आई डोंट थिंक उसको कुछ होगा। He doesn't seem like a complacent kind of a guy. I think he's quite clever. He knows what he's doing. मुझे ना ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा था, मैंने रिसेंटली ये देखा था। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट आल्सो, आई थिंक यू इवन शेयर्ड दिस वीडियो। मैं ये प्ले करना चाहता हूँ, मेरे को बड़ी हंसी आई थी ये अ, तो ये वीडियो प्ले Oh करते yes, हैं yeah, I बेसिक। played this video. Yeah, yeah. हाँ यार, ये बड़ा Ministry मस्त of है। Islamic Affairs website designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. Firstly, the ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. The call to prayer remains restricted to 1/3 of the volume of the loudspeakers, and loudspeakers are banned entirely for Quranic recitation, even if worshippers struggle to hear the Imam from the back. Secondly, the broadcasting of Taraweeh, Ramadan prayers, is banned on all media platforms. ओए होए। The famous Masjid Quba, where the legendary Imam of Medina, Muhammad Ayyub, rahimahullah, was discovered, and other mosques are all banned from broadcasting the recitation of the Imam and broadcasting prayers that are often watched in the hundreds of thousands by Muslims around the world. Yeah. The holy mosques of Mecca and Medina are not expected to be included in this ban. Bin Salman seeks to avoid a backlash similar to last year when he tried to apply this ban to the two holy mosques. और सारे Thirdly, नहीं। the new rules order that prayers should be shortened and the dua or supplications should be kept short. Fourthly, anyone looking to sit in the mosque in the last 10 days for i'tikaf must show ID. In other words,
The state apparatus will intimidate worshippers by collecting information for surveillance, a tactic that bin Ali used in Tunisia to discourage people from going to the mosques. The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. It's worth noting here that worshippers often donate during Ramadan towards meals on the basis of a saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever gives food for a fasting person to break his fast, he will have a reward like the one who fasted. The sixth rule is that worshippers are ordered not to bring their children to the mosques. That's the And best. almost identical to that Aye, of aye. Soviet satellite states that banned children from mosques in order to prevent Islamic influences on their nurturing and upbringing. The seventh rule is that mosques may not provide meals for fasting worshippers inside the mosque and cannot set up tents outside for communal meals at the time of breaking the fast. There are other rules, but bin Salman's message is absolutely clear. In Saudi, Ramadan must be quiet. यार This is ते brilliant. साडा बंदा है तो हाँ साड़ा बंदा मेरा भाई बंधु है, बस हमें मारे ना गुस्से में आके, यही तो वजह। देखो ना, ये देखो, ये इसलिए तो रो रहा है, ये देखो, ये तुर्की, ये देखो, इसको देखो, की होया इन्नू ये देखो, ये रो क्यों रहा है, देखना क्यों रो रहा है, ये देखो। Ümmeti Muhammed kan ağlıyor. Ümmeti Muhammed'in çocukları ateist oluyor, ateist. Ben Müslüman değilim diyor. हाय 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 लुट गए, वगैरह एथीस्ट बन रहे हैं, एथीस्ट, हमारे मुसलमान एथीस्ट बन रहे हैं। Yüzüne bakamayız कह arkadaşlar. रहा है हम Haberiniz रसूलुल्लाह को olsun. देख नहीं सकेंगे। Onun ümmeti teker teker. तो ये that look that it's gonna happen, you know। जो I've been saying this for a very long time, the biggest strength of Islam जो थी, जो सबसे बड़ी strength थी, उसकी बहुत बड़ी weakness भी बन गई है। इन्होंने आइसोलेट करके रखा लोग, मुसलमानों के दिमाग को इन्होंने बाकी की दुनिया से आइसोलेट रखा। पढ़ने लिखने का इतना नहीं आया, जैसा प्रिंटिंग प्रेस का रेवोल्यूशन नहीं आया यहाँ पे। मौलवी ने जो बता दे, मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ मुसलमान जो थे, अब तो शायद अभी वो परसेंटेज बढ़ जाएगी, बट मे बी 99% मुसलमानों का जो इस्लाम का नॉलेज था, वो कहाँ से आता था? मस्जिद से आता था। और मस्जिद में अगर देवबंदी मौलवी बैठा हुआ, वो देवबंदी बातें बताएगा, सिखाएगा उसको, और पूरा कोर्स होता था उसका 7 साल का या जो भी, वो कोर्स होकर ट्रेनिंग निकल के आती थी, वो मस्जिद में इमाम बनता था और उनको वो बातें सिखाता था जो वो अपने मदरसे से सीख के आया हुआ। एंड दैट वाज द और इसी तरह इस्लाम चलता चला है। ऑब्वियसली यू कांट रियली ब्लेम देम कि जाहिर बात है, किताबें किसने पढ़नी है, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन अब दिस इज अ न्यू चैलेंज, एंड और उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि हम जैसे लोग जो आ गए, दे कांट इवन साइलेंस अस। अगर कोई इस तरह का कोई पढ़ लिख के कोई निकल भी आता था, जैसे कि हदीसें पढ़ ली या कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, तफसीर पढ़ ली, वो अगर पाकिस्तान में रह के कुछ कह देता या किसी भी मुस्लिम मुल्क में कह देता, उसकी उसकी सरतन से जुदा हो जाता था। बट दैट इज इट्स दैट्स व्हाई रिफॉर्म होता रहेगा। बट आई आल्सो थिंक रिफॉर्म इज अ नीड ऑफ द आवर फॉर देम। It's next to impossible to keep going the way things are with जो standard orthodox, जो standard method है, the propagation of Islam. सो एक लास्ट क्वेश्चन और फिर ऑडियंस का लेते हैं और फिर टाटा बाय बाय करते हैं। तो क्या रिफॉर्म का एक ही तरीका है मुस्लिम वर्ल्ड में? कि अगर हम इतिहास देखें तो मुतज़िलाइट्स ने भी काफी फोर्स यूज किया था, अतातुर्क ने भी काफी फोर्स यूज किया था, फ्रांस में भी जो इस्लाम को कंट्रोल करने के तरीके हो रहे हैं वो काफी क्लियरली रिजिड हैं, और अभी एमबीएस को देख रहे हैं, ऐसे साडा ही बंदा है। तो मतलब क्या मतलब ये आर्गुमेंट हारिस बार बार आती है कि इस्लाम यूनिक है, उसके लिए फोर्स ही एक रास्ता है। डू यू बाय दिस आर्गुमेंट? मतलब ऐसा है ना, इस्लाम को ऐसा यूनिकॉर्न बना दिया जाता है कि जैसे बाकियों में तो कुछ है ही नहीं, जरूर इस्लाम ही इस्लाम है। I think इसके अंदर भी I think थोड़ी सी arrogance है। इसके अंदर भी I think there's a bit of even from ex-Muslim they think that maybe they believe के जो इतना बड़ा मसला है कि again the problem is ना कि हुआ नहीं ना, but again this first time for everything, the first time Reformation का Christianity का भी जो reform आया था, that was the first time. So जो different model जो आपने बताया, अतातुर्क ने secularization की, he didn't do reform, he didn't reform the theology of Islam, he reformed, if you want to say, he actually reformed the political scene,
and he went from Khilafat to Western style constitutional secularism. Okay. French जो हैं, they are not Muslims, they are outsiders. So उनकी तो जो भी अच्छी चीज होगी उसको that would be seen as oppression. जो जो reform, so that's what there hasn't been any reform attack at the Islam itself. This seems like the first attempt. By the way, if you remember, he said that 97% of the hadiths need to be thrown out. This is big. और जब हम इनकी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल बुक्स में जाते हैं, उसके अंदर इतनी गंदी बातें लिखी हुई हैं, इतनी आई वाज जस्ट डूइंग द रिसर्च फॉर अ रिबटल टू मुफ्ती वाजदी. ऐसे ऐसे गंदे रेफरेंसेस मिले मुझे जो मौलवियों ने लिखे हुए हैं छोटी बच्चियों के साथ बातें करने के लिए. Someone like me, even I hadn't gone that deep in, like I had barely scratched the surface. So इन सारी चीजों को रिफॉर्म करना, you would need a bit of both. You would need a strong authoritarian. I don't think you'd be able to. You might be able to do it eventually. For example, let's just say Pakistan make a democracy, a luli langdi democracy, अगर सही democracy बन जाती है, at some point, maybe in 100 years' time, when enough generations have gone past and they have come to realization that yaar, this is not right, and slowly there has been some progress made, like हमें पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस्लाम की रूह से बड़ी बिल्कुल गलत है. लड़कियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना, उनको आला तालीम भिजवाना, लड़के लड़कियों का इकट्ठे पढ़ना यूनिवर्सिटीज में, all of these things are actually very un-Islamic. But to some point they managed to reform it just bit by bit. So at that rate, if you go through a normal process jahan pe koi strong man nahi hai, then it might take 100 years for Pakistan to be at par with countries that are advanced today. Maybe so. लेकिन जो दूसरा जो आपने कहा वो like MBS type, he has money, he has the resources, and he has the desire to do it. So you have a few Molvis running amok. They can either be bought off, या उनको खरीदा जा सकता है, या उनको MBS style जिस तरह वो Ritz में उनको सारों को बंद कर दिया था, I think. So that something like that could also be. I think that can be done. I think that's probably the most effective way to do it at this time. जहाँ तक जो आपने कहा कि I think there's a bit of hubris in that कि Islam is unique. I think every religion has its own flavor. Islam का flavor था ये कि this is a little word of God, we cannot change it. But as I said, like they have been changing the meaning beyond recognition for so long. So फिर रह के क्या पीछे? फंटी लगाने का मतलब उन्होंने बदल दिया कि strike out है ये. Like I mean, if you can change a meaning to that extent, then what's left? फिर क्या रह गया? So no, I don't think. Before you go to the questions, let me show you why someone like MBS is required, especially in the heart of Islam, which is Saudi Arabia. This video, I cannot imagine is more than 5-6 years old. Maybe can't be more than 10 years old. Definitely not more than 10 years old. But have a listen to this in the house of Islam in Haram. What are they? किसकी दुआ? ये दुआ क्या कर रहे हैं? And this is not for Hindus, but this is for Christians and Jews. Read it. Oh Allah, curse the Jews. No, terrible. I think I would have a little bit of going in the background so you can hear me clearly. Oh Allah, curse the Christians. Oh, no, उर्दू में बोलूँगा ताकि वो कहीं YouTube पे ना जाए. ओ अल्लाह, क्रिश्चियनों के ऊपर लानत भेजो, यहूदियों के ऊपर जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर भी लानत भेजो. और हर उस गद्दार के ऊपर लानत भेजो जिसने इस्लाम को अबैंडन कर दिया, जैसे एक्स मुस्लिम. और अल्लाह इनको गरीब बना दे, इनकी लाइफ को मिजरेबल कर दे. ओ अल्लाह, इनको घटिया पन के कपड़े इनके ऊपर पहना, इनके ऊपर आफतें डाल, डिजास्टर्स डाल, और इनकी जिंदगियों में तकलीफ भर दे, मिजरी भर दे. अल्लाह इनकी जिंदगी में इनको गरीब बना दे और इनके ऊपर लानते डाल दे, बदवाएं इनके ऊपर, और इनको तड़पती हुई मौत दे, तड़पती हुई. ओ अल्लाह, अपना वादा पूरा कर जो तूने हमसे वादा किया कि तू क्रिश्चियनों और यहूदियों के ऊपर अजाब लाएगा, यानी कैटास्ट्रोफी लाएगा उनके ऊपर. अल्लाह वादा अपना पूरा कर. कुरान के अंदर है ये वादा. ये अल्लाह हमारी दुआ है. ओ अल्लाह, इसको कबूल कर. I mean, the amount of I don't think there is any religion. मैंने ये इसके ऊपर बनाई थी. I don't think there is a single religion
चर्चेस में ये नहीं होता. चर्चेस में वो गाने गाते हैं, हिम्स गाते हैं, चले जाते हैं. आई डोंट नो अबाउट यहूदीज. आई एम प्रीटी श्योर कि हिंदुओं में भी नहीं होता होगा इस तरह की कोई बात कि अल्लाह है भगवान. मुसलमानों को ना पूरी से पूरी बीमारी दे. बीमारी, कीड़े पड़े इनको. इनको ना तड़पती हुई मौत दे ए भगवान. But this is happening not in your गली की मस्जिद. This is happening in Haram Sharif. This is happening in the home of Islam. For those people who want to understand Anand Ranganathan's argument, ये स्वराज्य में आनंद लिखा था 2019 मार्च 23 को, सिलेक्टिव सबमिशन एंड द क्वेस्ट फॉर अ मुस्लिम आइडेंटिटी. जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना. और मैं एक काम करता हूँ, इसका लिंक कॉपी करके है ना स्ट्रीम में डाल के आपके स्क्रीन पे भी दे आता हूँ. जिनको पढ़ना होएगा जाके पढ़ लेना. आनंद रंगनाथन की आर्ग्यूमेंट है, जिनको पढ़ना है पढ़ लेना. जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट आनंद की बेसिकली जो हमने चर्चा की थी वो ये आर्ग्यूमेंट थी. मगर यार देख, रिलीजन है ना, कोई भी रिलीजन की टेक्स्ट चेंज नहीं हुई है. टेक्स्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. बाइबल आज भी वही है जो थी. इन इवन इन हिंदुइज्म स्मृतिज रिजेक्ट होती हैं, श्रुतिज तो चेंज नहीं होती ना. श्रुतिज तो आज भी वही रही हैं. वेद का कोई एक शब्द चेंज नहीं हुआ है, उपनिषद का एक शब्द चेंज नहीं हुआ. वो अलग बात है कि वेद में कुछ प्रॉब्लमेटिक ऐसा कुछ है नहीं तो लोगों को इशू नहीं होता. और सारे जो डिंग डोंग हुई है वो स्मृतियों में हुई है. और हिंदू बोलते हैं कि वो तो डिंग डोंग हम बदल देंगे, हमको क्या करना है. तो हिंदू बच गए उसमें. मगर अभी अभी क्वेश्चन लेते हैं. मैं एक ही लास्ट एक पॉइंट कहूंगा. अभी जैसे वो याद है, इरशाद मैंजी जो कैनेडियन लेस्बियन मुस्लिम है, उसने बड़ा एक बहुत साल पहले ये बात बोली थी. कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कैनेडियन लेस्बियन मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट. मगर वो It's more है, identity politics. Everyone's yeah. मगर है ना वो. इरशाद एग्जिस्ट इन कनाडा एंड शी इज अ वेरी वोकल कैनेडियन. लाइक काफी नोन है इरशाद Lesbian कनाडा में. reformist Muslim. Got यस, it. लेस्बियन रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम है वो. पॉइंट ये है कि इरशाद ने बोला था कि वो जो वर्जिन्स का भी जो है ना, सीरो एरेगमेक ट्रांसलेशन में तो वो रेजन्स है. और यार खजूर वास्ते मर गए. Yeah, that makes sense. Again, this is why this is the reason why कि जो आप पूछ रहे हो ना कि जो ex Muslims हैं या जो थोड़ा सा पढ़ के, we're not saying कि we are scholars of Islam, but we're saying that we've done fair bit of study, as much as a decent person should do before he makes up his mind. जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और इनकी commentaries और opinions पढ़ते हैं, then we know कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है. And as you said, like, why would you be giving a bribe के ऊपर आकर खजूरें मिलेंगी तुम्हें? Ah, and then there's so much other literature which actually f- describes physical characteristics of it. And then they say, oh, I think they use the argument कि यही ये बाद में उन्होंने किया. माय फ्रेंड उसी अभिजीत उसी को अय्यर तो इन्होंने मित्रा सेज आई एम अ ट्रांस लेस्बियन मुस्लिम. हाँ अभिजीत सुधर जा रामखोर. anyway. So ये अच्छा, तो अभी एक क्वेश्चंस लेते हैं अभी और फिर रैप Right. अप करते हैं. यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी ने. कैन एमबीएस ब्रिंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट मूवमेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड? यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि वो बंदा है तो डिक्टेटर, तो वो वेस्टफेलिया कैसे लाएगा यार? नहीं, because he would be talking about, उसके पास एक और तरीका है ना, रिफॉर्म का तरीका. um you know the agreement जो Saudis का वहाब्स के साथ है, हाउस वहाबीज के साथ है कि like you have autonomy over how you're going to sort out um the religious affairs, और जो administration और जो government के जो rules है वो हम उसको करेंगे. And that was like a holy alliance between them, and that's why ये जो alliance थी बड़ा अरसा तक चलती रही. Now MBS is probably the only person who's actually challenging that. Effectively, he has already done this, whether there's no treaty, of course. And I think he's going to keep on doing it like that without, इसने उसको stealth के through, ये, by the looks of it, he wants to handle it stealthily. कि ऐसा ऐसा किया जाओ. Why do you have to announce it? Why do you have to? And again, like if I was MBS, why do you have to declare an open war? They do it. Even this video just mentioned बताया कि he actually tried to ban जो recitation है,
he was about to do it all around, everywhere, including Makkah and Medina. But then there was a bit of a backlash, so he said, "Okay, you can do it Makkah and Medina." किसी ने बोला हौले हौले करो हौले हौले Hole, 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 halki aanch pe nachaao na. So, yeah, he doesn't need much failure. That would be a massive failure. It would be East failure. ओके ये किसी ने लिखा है तेरे चैनल पे हारिस भाई मेनी मुस्लिम apologists are using verse 13 of surah tauba Toba. Mm. claiming that infidels attacked first as written in that verse 13 and that's why this whole chapter came into existence. Your thoughts on that? Well, it's a very yeah. I've discussed that in my book. This is when the Ghazwa started. तो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हुई थी बदर की एंड देन दे हैड अ ट्रीटी के sacred months. I think this is the verse you're talking about के the sacred months have passed. That's one. They're actually somewhat right. लेकिन उसके ऊपर जो critics हैं Prophet Muhammad के वो यही कहते हैं कि Prophet Muhammad also saw at that time कि it is in his favor to break the treaty. So there was this instance where this woman, I forgot her name, it's written in my book in detail. I think in chapter 4 or something. 4 or 5 maybe. There was this woman जो ट्रीटी थी कि अगर कोई मुसलमान इधर आ जाएगा कोई काफर मुसलमान के पास आ जाएगा तो मुसलमानों को वो काफर वापस करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा अगर कोई मुसलमान उधर भाग के गद्दार चला जाएगा काफरों के पास तो वो वापस करना पड़ेगा सो देन केम दिस वुमन वो वहां से भाग के आ गई तो मुसलमानों ने काफरों ने कहा मुझे वापस करो ये अपनी बिकॉज मैन वर द केयर टेकर्स ऑफ देयर वुमेन एट दैट टाइम तो अब प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं क्या करूं ट्रीटी का क्या करूं यार ये तो ट्रीटी है मुझे वापस करनी पड़ेगी एंड देन कन्वीनियंटली अ वर्स केम डाउन कि नो नो यू डोंट बिलीवर्स को आपने प्रोटेक्ट करना सो और मुसलमानों ने ये कहा कि there was another tribe, not the direct tribe of Quraysh. There was another tribe that was an ally of Quraysh. They had actually attacked Muslims elsewhere. So Muslims actually were looking for this idea कि ये उन्होंने breach कर दिया. When you look at it technically, जो agreement था वो Quraysh के साथ था और Quraysh ने वो agreement नहीं किया था. तो so Muslims said कि the Kafirs have already broken the treaty. So therefore, we don't have to oblige by it. We don't have to send the woman back, and that's how the thing fell apart. Sulh Arabia, but लेकिन ये जब वर्ष आई थी, so at that time there was an agreement जो उनका एक tradition था कि sacred months जो होते हैं जो like they had some sacred months के in months में वो attack नहीं करते थे एक दूसरे के ऊपर. So that's the verse is about कि when the sacred months have passed, we're coming for you, and then yeah, Muslims had a pretty good run after that. Okay, fair enough. अभी दूसरा क्वेश्चन है to what extent can MBS go in his attempt to reform Islam? I mean, he's going to go the whole hog, hole hole. Hole hole वो लगा रहेगा. I think yeah, I think he's gonna keep doing it. As I said, this is what I'm saying. The belief that he has, uh, because I'll tell you why मेरा दिल ये कहता है कि साड़ा बंदा. Because he's young and he's ambitious. There are two ways of doing it. Why rock the boat? Especially if you're at such a good power throughout history, right, Kushal? People have always kings and queens and presidents and dictators and everyone has always used religion. The power of religion is so effective. लोगों को मजहब के पीछे लगा दो, that somehow legitimizes your rule, और लोग भी खुश हो जाते हैं because you don't have to rock the boat. So, but for someone to actually go out of his way and say, you know what, screw this, I'm gonna go around this, I'm gonna f you up, then it means के like इतना जो हौसला होता है ना वो किसी एक्स मुस्लिम के अंदर से ही आएगा, यानी वो जिसको ना बड़ा जहर लगती है ये चीजें. I think that's probably why he's doing it. But anyway, that's again my all it's all a conjecture. Okay, ये मेरे लिए प्रश्न है मगर तू भी ले सकता है इसको. Sorry, I'll put it up on the screen. Can any Muslim say Prophet Muhammad isn't the ideal example for eternity? Can there be Islam without Prophet Muhammad? One God concept existed in all religions, all monotheistic religions. I would not say Hinduism has a one God concept. It has a one reality concept. It's a huge difference between monotheism and monism, which I think even Hindus don't realize. Well, actually, explain that part to me, because a lot of Tawheed, jo monotheistic, obviously Muslims being monotheistic, and they have they're probably the most stern out of everyone.
And they also use this argument के Hinduism की भी like all roads lead you to Rome, and it leads to one God, and the rest are the avatars and etc. So one what do you mean reality, by yeah? one So what do you reality. mean by that? Yeah, what do you mean The by that? biggest difference between the monistic Brahman, which is the Nirgun Brahman, and the Tawheed concept of Islam or Christianity or Judaism is, in these three big monotheistic religions, अभी मैं Mormonism और बाकी सारे नहीं ले रहा, पर the creation or and the creator are separate. They're different. They're not one. तौहीद में भी भगवान एक है, रब एक है, मगर उसकी क्रिएशन उससे अलग है. Yeah, मोनिज्म Khalik में, and Makhluk. Khalik and Makhluk. Yeah, that's pretty understandable. Yeah. मोनिज्म में सब कुछ ब्रह्मण है. Brahman Everything is Brahman. isn't Brahman is an entity though? Like isn't he God, the primary It God? is God, magar everything is Brahman. That's a giant difference between the two. There is at best two monotheism को है ना crypto dualism बोल सकता है. Dualism द्वैत, क्रिप्टो द्वैत है, बिकॉज द्वैत में भी बहुत सारी न्यूआंसेस हैं. तो मैं द्वैत को मोनोथीस्टिक नहीं बोल रहा हूँ. इसके पहले कि जो हिंदू द्वैतिन्स है वो एक्साइट हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ समझाने के लिए, एनालाइज कर रहा हूँ. मगर बहुत बड़ा डिफरेंस है जब हिंदू कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्राह्मण हूँ, ये जो पूरी कायनात है ये ब्राह्मण है, हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब में रब है. वो बहुत अलग है. वो लिटरली रब है हम बोल रहे हैं. और शायद इसका सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आया इंडिया में जब बुल्ले शाह और ये लोगों ने कोशिश की अनल हक को और अद्वैतिन बनाने की. द क्लोजेस्ट अटेम्प्ट वाज आई एम हिम, राइट? अनल हक इस्लामिक वर्ल्ड में उसका तो सर कलम कर दिया उन्होंने, मंसूर हल्लाज का. मंसूर हल्लाज का तो सर कलम कर दिया जब उसने बोला अनल हक. उसका सर ही काट दिया उन्होंने, या बुल्ले शाह ने या वारिस ने या जितनों ने भी बाद में कोशिश की. मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने भी मोनिज्म पूरी तरह से अपनाया, मगर उन्होंने कोशिश की तो उनके भी छितरौली हुई है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आई थिंक इवन हिंदुओं को रियलाइज नहीं होता है, ईस्टर्नर्स को रियलाइज नहीं होता है कि वो मोनोथीइज्म को मोनिज्म समझते हैं. भाई मोनिज्म बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें जायंट जायंट लेयर्स हैं जो मोनोथीइज्म में नहीं है. So the concept जो primary patron is Vishnu, the primary patron god of Brahma. Brahman is nirgun, attributeless. Yeah, okay. So जो argument है, जो avatars, all avatars lead you to, I mean, the different forms of. वो सगुण ब्राह्मण है. सगुण ब्राह्मण में विष्णु भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं. वो सगुण है गुणों के साथ. मगर निर्गुण ब्राह्मण है वो तो not this, not Everything. this, नेति नेति. It is beyond everything. जिसको फिलॉसफी में तू क्लोजेस्ट वर्ड यूज कर सकता है, via negativa. I don't even know that, but sure. So ये बहुत अलग है और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. तो मेरा आंसर ये होगा कि कैन देयर बी एन इस्लाम विदाउट प्रॉफिट मोहम्मद इन द फ्यूचर? I don't know. Because you would. What can be done is you basically get rid of all the things that modern values consider problematic, and you can just say, well, yeah, I don't accept those values of Prophet Muhammad also. I think that day is not far away where people will humanize Prophet Muhammad and they will basically be like, no, I don't agree with everything Prophet Muhammad said. Even Muslims would. Listen, today non-Muslims definitely don't consider Prophet Muhammad to be their prophet, right? Nobody does. I don't. And many others don't. And that's fine. It's not like Muslims are taking offense to that. They are living in a world where, Muslims are coming to terms. Yeah. One of the biggest problems is you're right. You like use the right word. People will start humanizing Prophet Muhammad. Because you might have been sick of this. जो बड़ी दफा आपने देखा होगा कि किस तरह मुसलमान कहते हैं कि 100 influential men, Prophet Muhammad top पे, वो कौन सी वो किसकी book थी उस बंदे की? They just keep telling everyone. If you look at who's the most influential men, Prophet Muhammad comes at the top. I think Isaac Newton is number 2. Jesus is 6 or something. So it's influential, but they don't care. Muslims like to flex.
Prophet Muhammad was, he was the best man, blah blah blah. And I said that not necessarily as a diss. कि yes, हजरत मोहम्मद को मुसलमान उनको एक तरीके की बहुत एक खुदा से भी ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं, और which is actually against the spirit of Islam itself. It's kind of a deification of Prophet Muhammad जो कि नहीं होनी चाहिए इस्लाम के अपने कॉन्सेप्ट में। और मुस्लिम्स लिटरली कहते तो हैं कि नहीं, खुदा की हम इबादत करते हैं, हजरत मोहम्मद से हम प्यार करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ऑफेंस लेते हैं, अल्लाह के ऊपर ऑफेंस नहीं लेते, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर आपकी गर्दन उतार देंगे फटाफट। सो तो वो जो ह्यूमनाइजेशन, ये एक तरीके की डीइफिकेशन हुई हुई है, उनकी ह्यूमनाइजेशन जब होगी, एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट मुसलमानों को अर्क होते हैं मुसलमान जब हम प्रॉफिट मोहम्मद की, ऑल्दो फेयर इनफ उस जमाने की चीजें थी, उस जमाने में की मोरालिटी और थी, सो देयरफॉर छोटी बच्ची शादी की या ना की, इट्स दैट्स अंडरस्टैंडेबल इफ यू लुक एट इट इन अ टाइमली मैनर। लेकिन फिर जब हम उनको आजकल के ज़माने में, फिर अगर आप कहते हैं इंटरनल उनकी मोरालिटी है इस्लाम की, या उनकी आजकल के ज़माने में अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो देन इट बिकम्स, देन यू सी, आई डोंट थिंक इवन हिटलर इज, उस मेरा ख्याल हिटलर को भी उतना बुरा भला नहीं बोला जाता इस वक्त, क्योंकि हिटलर एक इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल फिगर था, बट ही इज गॉन। अनलेस वो यहूदियों को जब यूज़ करना होता है तो वो कर लेते हैं उसको याद कराने के लिए। लेकिन if you look at it, I think if there is any thorough study done, I think the most vilified अगर कोई बंदा है, I get it, the most loved भी हैं, I think कितना कहते हैं 2 बिलियन 2.4 बिलियन लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जो विलिफिकेशन भी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। I don't think there's any other person who comes even close. So yes, it's provocative, it might be लोगों को प्रोवोक करती होंगी ये हरकतें, बहुत सारे लोग ट्रोल करते भी हैं, बट बीनीथ द सरफेस एवरी टाइम यू डू इट समथिंग इज हैपनिंग। जब हमसे लोग पूछा करते थे कि आप इतने सख्त ज़बान क्यों इस्तेमाल करते हैं, एंड देन वी ऑलवेज यूज्ड टू से दिस, एंड इट्स ट्रू। जब हमें भी काम करते हुए 5-6 साल तो हो गए हैं कि भाई हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम मुसलमानों को डिसेंसिटाइज करना चाह रहे हैं, एंड यस, एंड आई थिंक इट्स हैपनिंग। आई हैव नेवर desecrated a holy book, but there's so many other people who've done it, and now they do it, nobody cares, कोई उसकी केयर ही नहीं करता। So a lot of these things actually are having an impact, और ये इस्लाम रिफॉर्म हो ना हो, मुस्लिम दुनिया जरूर रिफॉर्म हो रही है, and I think that's what people mostly say. बट यार मुझे एक बात बताओ ना, इस्लाम और मुसलमान को सेपरेट कैसे कर सकते हो? रिलीजन इज व्हाट बट इट्स फॉलोअर्स। Yeah, you're right. I mean, these things go hand in hand, but at the same time, but we do have ना, हमारे पास है reformed Muslims भी हैं ना, वो उनकी people have this amazing knack for having their own explanations, having their own interpretation, and living, go their merry way and living their lives. कितने मुसलमान हम हैं, शराब नाच गाने भी कर लेते हैं, मुसलमान है, आपको बताएंगे, मौलवी को लेक्चर दे रहे होंगे कि इस्लाम क्या है। So, yeah. मैं सिर्फ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, कमेंट्स नहीं लेने वाला हूँ। After 9/11, Islam backlash at first and Islam spread rapidly in the West. October 7th, Islam is facing backlash now. Will it take off again? If not, what is the difference now? Interesting question. I think it's already, some people are already saying, I don't know how true is that, because मुसलमानों को हमेशा बड़ा शौक होता है प्रोपेगेंडा करने का ना। I've shown that figure so many times कि there are more people leaving Islam than there are people leaving accepting Islam. But what they do, what Mominines are very good at, there is no other religious group जो इतना motivated है या इतना अपने डिस्प्ले में इतना इतना वाइब्रेंट है, अपना विविडली अपनी अचीवमेंट्स को दिखाता है, और उसकी अचीवमेंट ये होती है कि we have, how many people we have converted. The Muslims have this amazing obsession with converting people, because to somehow they can tell the world कि देखा ये सही मजहब है, that's the reason why. That's why they do it. So they have this obsession all around the world, everywhere. So there've been some videos have been circulating कि कुछ 5-6 गोरे मिल जाते हैं इनको, 10-15 गोरे, 20-25, even let's just say there are 100 गोरे, yeah, अगर 100 गोरे भी
इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, that's nothing because people are leaving in thousands. So people say that I don't know. So ये आजकल वीडियो पोस्ट अक्टूबर 7 ये चल रही हैं वीडियोस, but I don't know who knows कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है. But I genuinely believe कि they lie to people, especially women. They lie to them. उनको पूरी बातें नहीं बताते. और अभी हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी कवर की हैं. 3 औरतों की वीडियोस मैंने कवर की हैं. आर्मिन ने की हैं, हमने की हैं, या ट्वीट्स वगैरह की हैं, जहाँ पे वो बताती हैं औरतें कि हमें तो ये बताया ही नहीं गया. और वो बहन जी मेरे से शादी करेंगे, वो गोरी होती है, कोई जर्मन शर्मन, तो वो तो मौलवी वैसे पड़ जाते हैं, ऊपर रिश्ते भेजने लग जाते हैं. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. ऑफ पुटिंग देयर वाज अ वीडियो दैट वी शेयर्ड, उसको भी वो कहती इतने थोड़े मौलवी सारे, कहती जब से मैंने इस्लाम कबूल किया उसने इस्लाम ही छोड़ दिया, उसने 10 से इस्लाम ही छोड़ दिया. उसने कहा बहन पहले मुझे तो सिस्टर सिस्टर कहते थे, अब सारी शादी करेंगी मेरे से. सो आई डोंट नो, दैट्स जस्ट ऑन अ सीरियस नोट कि ये हो, people go through phases यार, ये चीजें आती जाती रहती हैं, but I think overall people are leaving. वो तो खुदाई खिदमतगार, would the खुदाई खिदमतगार movement be considered early modernity in Pakistani Islam, since Bacha Khan did try to bring about grassroots level change? I don't know. I don't think Khudai Khidmatkar is going anywhere or went anywhere. Are they still even active? I don't even know. No, I think if any reform or anything that's going to happen, that's going to happen through. I think it's going to happen through maybe these new social movements, like like the Aurat March ho gayi, LGBTQ movement ho gayi. Even they are there in Pakistan. Transgender movement is very vibrant in Pakistan. और एथियस्टों ने इनको डंडा दे के रखा हुआ है. सो दीज थिंग्स आर शेपिंग, एटलीस्ट हमारे जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये द सेम सिमिलर थिंग्स इन बांग्लादेश एज वेल. Don't you think that MBS shall slow down for some years and let the change become a norm in society? If he continues this way, will he go down like King Faisal? I mean, it's difficult to say whether he'll go down like King Faisal or not, but no, I think again, I look, वो hindsight is king ना. वो hindsight के बाद तो फिर अगर वो जब हो जाएगा, फिर आप कहेंगे, परतमेश कहेगा मैंने कहा था ना, वो टाइम से हम नोट करके कहेगा एक, अगर कुछ हो जाता है. Um, but I think he's smart enough. I think he knows this. He knows what he's doing. I mean, कोई भी आप बड़ा काम करते हैं उसमें ये challenges तो होते हैं, रिस्क भी होते हैं. एंड देन जब वो रिस्क पे ऑफ होता है तो रिवॉर्ड बड़ा जबरदस्त होता है, और जब नहीं होता तब लोग कहते हैं बेवकूफ आदमी था, देखो क्या कर गया, पागल आदमी. सो नो, I think he's going at a decent pace. He knows what he's doing. Why are Central Asian Muslims not so aggressive? We never see any problems created by them. Hanji, dasso. नहीं नहीं, आपको किसने बता दिया? जो उधर तालिबान के साथ जो ऊपर लड़ रहे थे वो सारे उज़्बेक, चेचन वगैरह सारे थे उधर, वहाँ पे ताजिक वगैरह, ये तो बड़े ब्रूटल किस्म के लोग हैं. उनकी पॉपुलेशन थोड़ी है, एंड दे वाज नॉट, बिकॉज दे वर अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस, दे डिड नॉट रियली go to Western countries like साढ़े बंदे. So Chechens, you don't want to cross paths with them. और ये the Uzbeks, Tajiks, they're pretty rough people. उनकी populations थोड़ी हैं. There hasn't been any that much of a political motivation. They've been busy with Soviet Union के बाद हुआ. So I think that उनको जहाँ पे बैठे हैं उनको वहीं पे रहने दें. The I don't know theologically वो aggressive है या या वो वैसे ही उनका कल्चर ऐसा. बट वो जो इसका सैमुअल पति का जिसने कत्ल किया था वो चेचन था, you know ना. और चेचन्स जो है, they take a lot of pride in being warrior nation. But again, Uzbeks and Tajiks सारे काबुल में नॉर्दर्न अलायंस में उनके साथ तालिबानों के साथ बड़ा लड़े हैं वो मुजाहिदीन. अफगान जहाद में उन्होंने बड़ा क्लीदी रोल अदा किया.
चलो, ये किसी ने मुझे पूछा है, कुशल जी, व्हाई इज अद्वैत वेदांता इन चारवाक नॉट मच पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अमंग हिंदूज इन इंडिया? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट अद्वैत? व्हाई आर पुरानिक टीचिंग्स? भाई ऐसा नहीं है, आई थिंक अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म टुडे इज एक्चुअली वेरी अद्वैतन. आई डोंट नो वेयर यू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम. आई थिंक वेयर अद्वैतन, सॉफ्ट अद्वैतिज्म हैज काइंड ऑफ सीप्ड इनटू इंडियन. चारवाक क्यों नहीं है भाई? वो अभी उसका तो आंसर कोई है नहीं, तो उसका मैं आंसर नहीं दे सकता. चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है. Why can't Mormons see their clear hypocrisy? They want all the minority rights but can't give any when in majority. Is it a superior? Yeah, this is a monotheistic problem. Monotheism can't survive like that. क्या यार लोग, basically if you take monotheism to the end कुछ हो ही नहीं सकता उसमें. Yeah, I think people are inherently tribal, or I think everyone does it, but I think it just depends on the basic values of your. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Would is reformed Islam be more effective in converting? ਇਹ ਬੜਾ Well, ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ no, but that's what. Huh? Yeah, that's actually very good. That's a very clever question. कि हाँ, अगर वो इतना अच्छा हो गया कि आपके सारे हिंदू कहें हम तो मुसलमान होना है हमने, फिर क्या करोगे? फिर कहोगे इसको रिफॉर्म जिहाद. ये रिफॉर्म जिहाद किया है हमारे साथ इन लोगों ने. Yeah, no, but I think no, I think अब जैसे यहूदियों में, because they are not concerned about converting people don't They convert don't. to In fact, they Judaism. make it hard to become a Jew. अगर आपको Jew Yeah. बनना भी है तो वो बड़ा मुश्किल कर देते हैं. हाँ, सोच, एक लड़का है, उसको मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, एक्स मुस्लिम है, वो यहूदी बन गया. एंड I was like, okay, but he said, oh, बड़े I had to go through a lot, which is fine. They actually make you study their religion. कितनी मजे की बात है. वो कहते हैं हमारा करना है ना, तो इस्लाम, you have to study it. That's what they mean by ये उसको बड़ा डिफिकल्ट करते हैं हमारे, क्योंकि इनको कुछ, ये तो 2 नंबर लोग हैं. ये कहते हैं आप किसी के पास जाके, किसी भी मौलवी, किसी आम बच्चे के पास भी जाके मैं समान हो जाता हूँ, वो कहेगा कुछ नहीं, हाँ, हाँ, बड़ा अच्छा मज़हब है, आ जाओ. वो नहीं कहेगा रिसर्च करो, पहले पढ़ो जाके, कोई नहीं. वो ऐसे डॉजी कार सेल्समैन की तरह कहेगा नहीं, आ जाओ, करो आके जहाँ पे जी. So yeah, that's a very actually admirable approach. So the point is कि नहीं, जब आपकी रेफर्मेशन में एक ये भी एलिमेंट होगा कि जो सेल्फ राइचियसनेस का जो कीड़ा है आपके अंदर, दैट नीड्स टू गेट दैट नीड्स टू बी किल्ड. उसको मारना पड़ेगा, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जब लोग फिर उसके ऊपर इतने पैशनेट नहीं रहेंगे, फिर लोगों को कन्वर्जन का शौक ही नहीं होगा. जब उनको शौक नहीं होगा तो आप लोग खुद ही नहीं होंगे. कभी कोई बंदा नहीं जाके कहता कि हाँ भाई, पीपल ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंसुलर पीपल, यानी वो अपने कल्चर में अगर उनको कोई तंग ना करे तो उसके अंदर खुश रहते हैं. वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे खुश रहते हैं. देन दे कैन गो एंड सीक आउट अदर थिंग. Yeah, maybe हमने I think गोरे probably might be one of the very few people जो अपने कल्चर्स को छोड़ के दूसरे कल्चर्स में जाके उनको एक्सप्लोर करने का उनका, maybe prosperity might have had something to do with this. um, I don't know. I think that's an interesting question. Maybe it remains to be seen. पता चलेगा जब जब चलो, वहां पे वक्त ही पहुंचेंगे. बताएगा. ये तो वक्त के पहले हम हम्म. नहीं बता सकते. मगर चलो, अभी बंद करते हैं. जाने के पहले तुझे कुछ कहना है? नहीं, I think, yeah, thank you. I think it was fun. MBS हमारा बंदा. मैंने बस ये कहना है कि हमें MBS, मुझे बड़ा मज़ा बड़ा आ रहा है कि हमें कहते हैं इन्होंने इन्होंने कनाडा पे, इंग्लैंड पे, अमेरिका पे झंडे लहराने हैं. मक्का मदीना पे हमारा बंदा आ गया. साड़ा बंदा है. तो ये मुझे मज़ा बड़ा आ रहा है. मैं तो मेरा इसमें हमेशा से ये रहा है कि रिफॉर्म इस्लाम का होना ही होना है. वो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रिलीजन एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है. रिलीजन इज मैन मेड, इट इज नॉट मेड बाय समबडी एल्स. And human beings reform, and when human beings reform, they show their reflection in the religion. ना क्रिश्चियनिटी का एक शब्द बदला, ना हिंदुइज्म में श्रुतियों का एक शब्द बदला. बेसिकली इंसान बदल गया, और जब इंसान बदलता है वो नए नए तरीके लाता है. ये कहना कि अगर तुम झूठ कहते हो तो तुम बुरे मुसलमान होगे, शायद तुम बुरे मुसलमान होगे कुरान के हिसाब से. और फिर वो एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट होती है कि
आपके घर में आप अम, एक यहूदी को छुपा के रखे हो पोलैंड में या उस समय की हम्म, जर्मनी में, और एसएस आर्मी आती है और आपको पूछती है अंदर कोई यहूदी है, तो आप झूठ बोलते हो कि नहीं है, क्योंकि अगर आप सच बोलते थे तो वो उसे मार देते थे। आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो, आप झूठ हम्म, बोल रहे हो। आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो। तो अगर वो अपने अपने उसकी मोरालिटी बदल जाती है, मगर उसे फिर भी रब से प्यार है, अगर उसे रब से प्यार है, मुझे नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई रब नहीं है, हारिस की ज़िंदगी में कोई रब नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? एक बहुत ही महान मुसलमान ने बोला था, "बुलिया आशिक होयो रब दा हुई मुलामत लख, तेनू काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो अख।" वाज़ बुल्ले शाह हाँ, गुड मुस्लिम और अ बैड मुस्लिम? क्या बैड था मुस्लिम, बुल्ले? बैड मुस्लिम, उसको तो बैड मुस्लिम ही अ, कहते हैं बस। ग्रेटेस्ट पंजाबी, वन ऑफ द हाँ, तो बेस्ट पंजाबीज़ एवर। आप बुल्ले शाह को, लेकिन उनको तो बेचारे को बैड मुस्लिम नहीं कहते, जो हमारे हार्डकोर मोमिनीन है। वो हार्डकोर जो कहंदे ने, मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट है वो। ओ हमारे यार, तुम्हारे पंजाब हिसाब का से है, हाँ, वो तुम्हारे पंजाब हिसाब का से नहीं ना कह ग्रेटेस्ट रहा है। वो। देखो भाई, तू भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, हम दोनों तू उस साइड का, मैं इस साइड का पंजाबी। पॉइंट है कि पंजाब के टॉप लाइन थिंकर्स में से एक वो मुसलमान बुल्ले शाह है। अब मुसलमान कहेंगे कि बुल्ले शाह ही मुसलमान नहीं है, बराबर कुछ मुसलमान कहेंगे, मगर अंत में तो यार बुल्ले शाह के गाने आज भी गाए जाते हैं, उधर भी गाए जाते हैं, इधर भी गाए जाते हैं। तो वो सारे के सारे जो बुल्ले शाह को गाते हैं वो बैड मुस्लिम हो गए क्या? हम्म, ठीक है। तो मैंने इसीलिए लास्ट में मैंने बोला मैं बुल्ले शाह को पढ़ूंगा, तो सोचो इसके बारे में भाई। अगर ऐसा ही है, अगर यही है परिभाषा बैड मुस्लिम की, तो भाई लेट द वर्ल्ड हैव मोर बैड मुस्लिम्स, हम तो यही कहेंगे। उसके ऊपर मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, तो जाओ एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, हारिस के दोनों यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक दिया है, जाओ सब्सक्राइब करो उसके यूट्यूब चैनल को, हारिस को ट्विटर पे फॉलो करो, मेरे भी चैनल को अगर हारिस के चैनल पे देख रहे हो, मुस्टंडो तो आओ, मुझे भी सब्सक्राइब करो, मेरे भी चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, झगड़े बड़े करना दोनों के चैनल पे जाके कमेंट में डिजिटल हजार बार चित्रॉल करना। 1000 बंदा मेरे चैनल पे देख रहा था, और मैं 1100 आपके चैनल पे देख रहे थे लोग, आज अच्छे खासे लोग देख रहे थे। हाँ, आपके लिए तो हर महीने करेंगे हम, ताकि ऐसी बातें हो। क्योंकि तो भाई टाइम बड़ा मेंबर होता है ना, बनना अब है, ये देखो ना, रात के 1 बज गया, मैं हवा बड़ी और चक्कर तू से की मैं करना है दवाइयाँ ले जाके, रहा था। तू जाके सो जाई हुण। तो नहीं, भाई लेकिन वो मेंबर बनना दिमाग है। भी तो रेडी रखना, दिमाग भी तो रेडी रखना पड़ता है, हाय वैसे तो हाय अभी मैं हाय सोऊंगा हाय, नहीं 2-3 घंटे तक। वेरी गुड, अच्छी बात ट्रेन है। ऑफ थॉट बंदा उतर जाता है उस ट्रेन से। अच्छी बात है। चल, तो अभी तेरी ट्रेन को मैं स्टेशन पे लगाता हूँ। मेंबर बनना है, हारिस के चैनल पे भी मेंबरशिप है, मेरे भी है, पेट्रियन हारिस का पेट्रन भी बन है, जाओ, मेरा भी पेट्रन। है। पेट्रन बन जाओ, इसका शायद बाय मी अ कॉफी भी है, मेरा तो मर्च भी है, वेबसाइट पे आ, जाके मर्च लेना है, अच्छा। kushalmehra.com पे मर्चेंडाइज भी ले ओह लेना। हो। फिर मिलेंगे अगले टाइम के लिए। टाटा अरे ते ऐसे बाय में। बाय। ओके, टाटा, बाय बाय।